Welcome to the online training module for National Achievement Survey 2021. Congratulations on being part of the largest education survey in the world. This module will help you understand the objectives of NAS 2021 and its key features. Let us understand what is National Achievement Survey. The National Achievement Survey is a nationwide sample-based assessment undertaken by the Ministry of Education, Government of India. NAS provides feedback on the effectiveness of the school education system in our country. NAS aims to collect information on the learning levels of students and diagnose gaps. The data from NAS is used to generate reports at state and district levels to improve the quality of education. But why is it so exciting to be a part of NAS 2021? Because NAS 2021 is going to be the largest school sample survey in the world being conducted on a single day across the country. Because all states and UTs across India will participate, involving all districts in the country. Because it covers a wide category of schools, from central government schools, state government schools, government-aided schools to private unaided schools. Because the data collected eventually helps attaining parity in academic quality. Because it is in pursuit of the spirit of National Education Policy 2020. Because it is designed by the NCERT as the academic authority in the country. And it will be administered by CBSE, employing highly robust practices. It will provide a huge opportunity for learning and capacity building during all stages of NAS 2021. NAS has been conducted since 2001 and was last conducted in 2017. The key grades involved are grades 3, 5, 8 and 10, and in key curricular areas include language, mathematics, EVS or science, and social sciences. This mammoth task will be undertaken with the help of key functionaries. At the district level, CBSE will appoint a district-level coordinator as a single point of contact for local coordination. At the school level, each sample school will have one observer and each classroom will have one field investigator. Additionally, state nodal officers and district nodal officers appointed by the state machinery would also facilitate the smooth implementation of NAS 2021. NAS 2021 will be conducted across 733 districts in India in 1.24 lakh schools among 39 lakh students. The premier agencies involved are Ministry of Education, Funding and Coordination, CBSE as the assessment administrator, NCERT as the assessment developer, NIC for ICT intervention automation, Niti Aayog as advisory support, and UNICEF for technical support. Thank you for watching NAS 2021 Overview. Let's gear up and extend our best support in the national endeavour launched for promoting quality in schools education. Welcome and thank you for choosing to view this training video to understand what is an OMR and how to use it for NAS 2021. Now, first let us understand what is an OMR sheet and what does an OMR sheet look like. OMR stands for Optical Mark Recognition, is a sheet used to capture responses for an MCQ-based test, assessment or survey. The OMR sheets show all possible answer options for a question in circular forms which the student needs to fill to record his or her response. An OMR sheet has multiple sections that a student needs to fill carefully. First, on the top of the OMR sheet, the student needs to fill in his or her name and the class roll number. All the other school-related information is pre-filled. In the next section, we capture the class section of the student, the age of the student, and other details. Here we fill the appropriate circle and record the response in the square as well. The adjacent section asking for student demographic data would be filled by the FI with the help of the teacher in charge present.
The FIs can leverage the Student Enrollment Register to get this data. Additionally, all general instruction about the OMR is also provided on the back side of the OMR. Now let us understand how to fill an OMR sheet correctly. On the day of the survey, the field investigators will also demonstrate how to fill the OMR sheets correctly and ensure that all students follow the correct way to fill their OMR sheets as per the steps shown in this video. Let's now understand the correct way of filling the OMRs. This is the correct way of filling the OMRs, that is, filled completely. Now let's understand how not to fill the OMR sheets. Marking a tick mark, marking a dot, or not filling the OMR completely are all incorrect ways of filling the OMR. Also, erasing or marking two options or overwriting on the OMRs are all incorrect ways of using the OMRs. On the day of the survey, FIs and observers will assist grade 3 and 5 students in filling the OMRs completely and correctly. FIs and observers can take all reasonable measures to ensure grade 3 and 5 students are comfortable filling the OMR sheets. Thank you for watching this video. We hope now you have a better understanding of how to fill an OMR. Welcome back. In this module, we will learn how to get the PQ, SQ and TQ filled accurately from different respondents. Do you know what PQ, TQ and SQ stand for? PQ stands for Pupil Questionnaire and is a background questionnaire to be filled by the students. TQ stands for Teacher Questionnaire and is a background questionnaire filled by the teachers teaching the respective subjects for that particular grade. For example, for grade 3, TQ will be filled by subject teachers teaching language, mathematics and EVS in the respective sampled school. TQ will be filled by the teachers of only the selected section, or in case of multiple sections, the section from which the maximum number of students will be selected. SQ stands for School Questionnaire and is a background questionnaire filled by the school head or school principal head of school. But why do we need to get these questionnaires filled? These questionnaires help us get the associated and background information such as perceptions, demographics, and available resources which may affect learning. These questionnaires help us correlate NAS results with multiple variables and thus understand the results better. Now, how and when to get your questionnaires filled? The filling of questionnaires will be coordinated by F1 and supported by the observer. As soon as the main NAS test ends and OMRs are recollected, the FIs need to begin the filling of PQ. For grade 3 and 5, the PQ will be filled in an interactive mode with the FI asking the questions one by one and noting down the responses on the PQ OMRs. In the interview mode, please ensure a few things. Make the child comfortable before asking the questions. Please read out the question as it is. Rewording or rephrasing the question may lead the child to answer in a particular way. Make sure you capture responses for all questions. The background or demographic information on the first page of PQ can be school or class register. For grades 8 and 10, FIs can simply distribute the PQs to students who fill the responses on the response sheet on their own. Before collecting and excusing the students, ensure that all responses have been filled. For SQ and TQ, you may hand over the questionnaire to the school head and teacher in charge before the commencement of the survey and collect them after all other NAS duties have been fulfilled. Ensure that the questionnaire are filled completely. With this, you have successfully completed your module for filling PQ, SQ and TQ. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के लिए एक ऑब्जर्वर के रूप में चुने जाने पर आपको बधाई। आइए समझते हैं NAS ऑब्जर्वर कौन है और उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या होती हैं। एक ऑब्जर्वर जिला स्तर के समन्वयक द्वारा नामित जिले के एक स्थानीय स्कूल से एक उप प्रधानाचार्य, PGT, TGT या PRT शिक्षक है। NAS सर्वेक्षण के लिए चुने गए प्रत्येक स्कूल को CBSE के आदेशों के अनुसार DLC द्वारा एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाता है। NAS सर्वेक्षण
ऑब्जर्वर की देखरेख में आयोजित किया जाता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि डेटा संग्रह विश्वसनीय है। आपको एक ऑब्जर्वर के रूप में कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जैसे सबसे पहले सर्वेक्षण के दिन आप डीएलसी या रिसोर्स सेंटर कस्टोडियन को रिपोर्ट करेंगे और टेस्ट बुकलेट, ओएमआर और बैकग्राउंड प्रश्नावली एकत्र करेंगे। एकत्रित करते समय एकत्रित किए जा रहे पैकेट पर UDISE प्लस कोड और स्कूल के नाम की जांच अवश्य कर लें। आपको अपने NAS पोर्टल लॉगिन के माध्यम से डीएलसी या संरक्षण के नाम और पते के बारे में पता चल जाएगा, जहां आपको सर्वेक्षण मटेरियल्स को एकत्र करना है। आपके नियुक्त पत्र में सैंपल स्कूल के नाम और पते का वर्णन होगा, जो आपको दिया गया है। ऑब्जर्वर को स्कूल के स्थान और डीएलसी स्कूल से उनके नियुक्त स्कूलों तक की दूरी और समय को ध्यान से नोट करना चाहिए। ये NAS का समय पर संचालन सुनिश्चित करेगा। NAS के पिछले दिन बुलाई गई मीटिंग्स के दौरान ऑब्जर्वर डीएलसी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद आप अपने नियुक्त सैंपल स्कूल को रिपोर्ट करेंगे और स्कूल प्रमुख से मिलेंगे और अपना नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद आप उन्हें उस ग्रेड के बारे में समझाएंगे जिसमें NAS आयोजित किया जाना है। आखिर में एक निर्धारित कमरे में रिपोर्ट करें, जहां आप सभी परीक्षण मटेरियल्स को रखेंगे और वितरण के लिए टेस्ट बुकलेट, OMR और प्रश्नावली की व्यवस्था करेंगे। एक बार ये हो जाने के बाद आप कक्षा एवं सेक्शन रजिस्टर एकत्र करेंगे और फील्ड इन्वेस्टिगेटर से मिलने के बाद छात्र सैंपलिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएंगे। अब छात्र सैंपलिंग प्रक्रिया क्या है? ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप और फील्ड इन्वेस्टिगेटर उन छात्रों का चयन करते हैं जो एक विशेष ग्रेड के लिए NAS 2021 देंगे। सैंपलिंग प्रक्रिया के बारे में एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका के रूप में बाद के मॉडल्स में समझाया जाएगा। सैंपलिंग के बाद आपको ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि चयनित छात्रों के बीच टेस्ट बुकलेट सही ढंग से वितरित की गई है और फील्ड इन्वेस्टिगेटर छात्रों के लिए निर्देशों को ठीक से पढ़कर बताते हैं। सुनिश्चित करें कि टेस्ट बुकलेट NAS ID के अनुसार वर्णित अनुक्रम के अनुसार वितरित की गई है। Welcome back. In this module, we will cover the sampling process which will be carried out by the observer and FI in the sampled school on the survey day. You need to carry out both the section and student sampling prior to conducting the survey. Before starting the sampling, please ensure to collect the attendance register from the school head or class in charge for the grade being surveyed. For the NAS student sampling, there are different scenarios and these have been explained next. Scenario 1. You report to school for the survey and for the grade in which the survey needs to be conducted. There is only a single section for the same. For example, in XYZ public school, for grade 3 survey, there is only one section, Section A. Now in Section A, if there are 30 or less than 30 students, then the survey will be conducted with all these students present. Update the control sheet accordingly with help of the student attendance register. This closes Scenario 1. In Scenario 2, let's assume XYZ public school for grade 3 survey has 5 sections. Then how to select which section to do the survey in? In this case, write the name of the sections A, B, C, D and E on chits of paper. Shuffle them and then randomly draw a chit. If say section B is drawn in chit, then section B is selected for the survey. Now at this point, check how many students are there in section B. In case there are exactly 30 students, then the survey will be conducted with these 30 students. But if there are less than 30 students, for example, section B has 25 students, then what will we do? As we have other sections, A, C, D, E, we will repeat the chit and draw method and get another section. For example, section C. And from this section, we will randomly pick 5 students to fill the gap. That is, 30 minus 25 is equal to 5. Update the control sheet accordingly with help of the student attendance register. Please note that the maximum students that can be surveyed as part of NAS for a given grade in a given school is 30. Scenario 3, last but not the least.
There is third scenario where after selecting the section, either in single section school or multi-section school, we end up with more than 30 students. Let's assume in XYZ public school, the section that is being surveyed has 50 students. In such a case, we will perform the following steps. In such situations, we need to calculate something what is called a sampling interval. Let's denote that with M. To calculate M, divide the total number of students in section with 30. So, in case of XYZ public school with 50 students in a section, divide 50 by 30 and you will get 1.6. Round off this number to the nearest integer, that is 2. So M is equal to 2. Next, write down roll numbers of students on different sheets folded alike. So, roll number 1 to 50 are written on different sheets and one sheet is drawn out at random. This will be the starting roll number for the survey of first survey student. Let this roll number be 32 in case of XYZ public school. Now refer to the attendance register you collected earlier and locate roll number 32. This student becomes the first sample student. Now using the sampling interval M, select every mth student, or in this case, every second student. So 34, 36, 38 and so on till 30 students are complete. If the count crosses 50, you start again from 1 till 30 students are complete. In case any students are absent, skip those roll numbers and select the next mth roll number till a total of 30 students are selected. The first child selected after the sampling is complete will be assigned NAS ID 01 and so on. This is also the order in which these students should be seated. Update the control sheet accordingly with help of the student attendance register. With this, you have successfully completed your module for understanding sampling. आप सभी का इस मॉड्यूल में स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम सैम्पलिंग प्रक्रिया के बारे में जानेंगे जो सर्वेक्षण के दिन सैंपल स्कूल में ऑब्जर्वर और फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा किया जाता है। सर्वेक्षण करने से पहले आपको सेक्शन और छात्र के सैंपल्स दोनों को पूरा करने की आवश्यकता है। सैंपल लेने से पहले कृपया सर्वेक्षण किए जा रहे ग्रेड के लिए स्कूल प्रमुख या कक्षा प्रभारी से अटेंडेंस रजिस्टर जरूर प्राप्त कर लें। NAS छात्रों के सैंपलिंग के लिए अलग अलग सिनेरियोज हैं जो इस प्रकार हैं। सिनेरियो 1 में आप सर्वेक्षण के लिए स्कूल को रिपोर्ट करेंगे और जिस ग्रेड में सर्वेक्षण किया जाना है उसके लिए केवल एक ही सेक्शन हो। उदाहरण के लिए XYZ पब्लिक स्कूल में ग्रेड 3 सर्वेक्षण के लिए केवल एक सेक्शन है, सेक्शन A। अब सेक्शन A में अगर 30 या 30 से कम छात्र हैं तो इन सभी छात्रों के साथ सर्वेक्षण कराया जाएगा। छात्र अटेंडेंस रजिस्टर की सहायता से कंट्रोल शीट को अपडेट करें। सिनेरियो 1 में बस इतना ही। सिनेरियो 2 में जहां सर्वेक्षण करने वाले ग्रेड में एक से अधिक सेक्शन हैं, मान लीजिए कि XYZ पब्लिक स्कूल ग्रेड 3 के लिए सर्वेक्षण में 5 सेक्शन हैं। फिर कैसे चुनें कि किस सेक्शन में सर्वे करना है? इस मामले में कागज के चिटों पर सेक्शन A, B, C, D और E के नाम लिखें। उन्हें शफल करें और फिर एक चिट को चुनें। यदि वो सेक्शन B का चिट है तो सर्वेक्षण के लिए सेक्शन B का चयन किया जाता है। इसके बाद ये देखें कि सेक्शन B में कितने छात्र हैं। यदि ठीक 30 छात्र हैं तो इन 30 छात्रों के साथ सर्वेक्षण किया जाएगा। लेकिन अगर 30 से कम छात्र हैं, उदाहरण के लिए सेक्शन B में 25 छात्र हैं, तो हम क्या करेंगे? जैसा कि हमारे पास अन्य सेक्शन A, C, D, E हैं, हम चिट और ड्रॉ विधि को फिर से करेंगे और एक और सेक्शन को चुनेंगे, उदाहरण के लिए सेक्शन C। और इस सेक्शन से हम गैप को भरने के लिए 5 छात्रों को रैंडमली चुनेंगे, यानी 30 - 25 = 5। छात्र अटेंडेंस रजिस्टर की सहायता से कंट्रोल शीट को अपडेट करें। कृपया ध्यान दें, किसी भी स्कूल में दिए गए ग्रेड के लिए NAS सर्वेक्षण कराने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या 30 होती है। सिनेरियो 3 में इस सिनेरियो में सेक्शन का चयन करने के बाद या तो एक सेक्शन स्कूल या एक से अधिक सेक्शन स्कूल में यदि हमें 30 से अधिक छात्र मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि XYZ पब्लिक स्कूल में
जिस सेक्शन का सर्वेक्षण किया जा रहा है उसमें 50 छात्र हैं। ऐसे मामले में हम निम्नलिखित कदम उठाएंगे। हमें किसी ऐसी चीज की गणना करने की आवश्यकता होती है जिसे सैम्पलिंग इंटरवल कहा जाता है। आइए इसे m मान लेते हैं। m की गणना करने के लिए सेक्शन में छात्रों की कुल संख्या को 30 से विभाजित करें। तो XYZ पब्लिक स्कूल के मामले में एक सेक्शन में 50 छात्रों के साथ 50 को 30 से विभाजित करेंगे। विभाजित करने पर आपको 1.6 मिलेगा। इस संख्या को पास की किसी संख्या से राउंड ऑफ करें। इस स्थिति में जो कि 2 है, इसलिए m = 2। इसके बाद अलग अलग चिटों पर समान रूप से छात्रों के रोल नंबर लिखें। 1 से 50 तक अलग अलग चिटों पर लिखना है और एक चिट निकालनी है। ये सर्वे या पहले सर्वे छात्र के लिए शुरुआती रोल नंबर होगा। मान लीजिए कि XYZ पब्लिक स्कूल के मामले में ये रोल नंबर 32 है। अब आपके द्वारा पहले एकत्र किए गए अटेंडेंस रजिस्टर को देखें और रोल नंबर 32 को सिलेक्ट करें। ये छात्र पहला सैंपल छात्र होगा। अब सैम्पलिंग इंटरवल m का उपयोग करते हुए प्रत्येक mth छात्र का चयन करें, यानी प्रत्येक दूसरे छात्र का चयन करें। तो 34, 36, 38 और इसी तरह 30 छात्र पूरे होने तक। अगर गिनती 50 को पार करती है तो आप 1 से फिर से शुरू करेंगे जब तक कि 30 छात्र पूरे नहीं हो जाते। यदि कोई छात्र अनुपस्थित है तो उन रोल नंबरों को छोड़ दें और अगले m रोल नंबर का चयन करें जब तक कि कुल 30 छात्रों का चयन न हो जाए। सैम्पलिंग प्रक्रिया पूरा होने के बाद चुने गए पहले छात्र को NAS ID 01, दूसरे छात्र को NAS ID 02 और इसी तरह सभी छात्रों को NAS ID दिया जाएगा। यही वह क्रम भी है जिसमें इन छात्रों को बैठाया जाएगा। छात्र अटेंडेंस रजिस्टर की सहायता से कंट्रोल शीट को अपडेट करें। इसके साथ आपने सैम्पलिंग प्रक्रिया का अपना मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।